हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट स्माइली गर्ल एंड आई एम अंजलि। सो टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू अ ईगल। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस NY का प्राइमर। ओह वेट, सबसे पहले बाल बांध लेते हैं। सो गाइस, मैंने अपना स्किन केयर पहले ही कर लिया था, सो इसलिए मैं डायरेक्ट मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस फाउंडेशन 9 to 5 Lakme। सो गाइज, ये वाला फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, इससे आपको बहुत ही अच्छी कवरेज मिलेगी। सो गाइज, आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रश। गाइस, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला कॉम्पैक्ट मेबलिन का 230 शेड। So guys, I am done with compact. Now I am going to do my eyes. So guys, अभी मेरे पास ये दो आई शेडो पैलेट है, तो लेट्स सी कौन सा यूज़ करें। पिंकिश टोन पे रखना है मुझे। तो गाइज, मैं ये वाला शिमरी शेड ये वाला लगाने वाली हूँ अपनी आईज पे। गाइज, एकदम थोड़ा सा आपको लगाना है फॉर अ शिमरी टच। मैं वही वाला ब्रश लेके, जिससे मैंने पिंक आई शेडो किया था, वही वाला सेम ब्रश लेके मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी, दोनों आई शेडोज़ को, ताकि कोई हार्श लाइंस ना रहे। या दैट्स इट। मेन चीज़ है आईज। अगर आपने ईगल मेकअप देखा है तो आपको पता होगा कि उनके पूरे मेकअप पे सबसे ज़्यादा काम आईज पे एंड ब्लश होता है। सो गाइस, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस आईलाइनर ब्लू हेवन का। So guys, now I am using mascara. तो
guys, I am done with mascara. Now I am going to use white kajal. So मेरे पास ये NY का white काजल है, ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, बट अभी भी इतना सारा बाकी है. So you can use this one. So now I am going to do my eyebrows. Yeah, it's done. So guys, now I am going to do blush. तो आपको इस लुक में ब्लश चीक्स पे नहीं लगाना है, आपको अपनी हाईलाइट वाली जगह पे ब्लश लगाना है. लेट मी शो यू. यहाँ पे आपको ब्लश लगाना है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा. और नोज पे भी. So guys, now I am going to make one heart on my cheek. So let's make it. Now I am going to do highlighter. Guys, we are done with highlighter. Now we only left with our lipstick. So I'm going to use this lipstick Elegant. So guys, डार्क सा आई शेडो लेके अपने लिपस्टिक पे ब्राउन शेड, and I'm going to put it on my lipstick. So guys, in the end I'm going to use this makeup fixer. ये वाला मैं यूज करने वाली हूँ, ये डेली यूज के लिए काफी अच्छा है. So guys, makeup is done. So अब मैं आती हूँ अपना आउटफिट चेंज करके. So guys, ये रहा मेरा फाइनल लुक. I hope you like this video. If you like this video, then give it a thumbs up, comment down below, and don't forget to subscribe to my channel. It would really mean a lot if you subscribe to my channel. Bye bye. See you in my next video.